Good morning students. Once again KD sir from KD शिवम चैनल सीरीज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो आज उस सीरीज का लेक्चर सीरीज का अगला वीडियो लेके आए हैं, दैट इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अगर कहना है तो इट इज जस्ट अ प्रिवेंशन, राइट? It is a prevention measurement taken by the court or the system or state. जब भी किसी जज या मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है ये ऑफेंस करने वाला है, उस पर कुछ डाउट है, बराबर ये शायद डिस्टर्ब कर सकता है सोसाइटी में, तो उससे कुछ श्योरिटी ले लेते हैं। उससे श्योरिटी या तो उससे बॉन्ड बनवा लेते हैं सो दैट वो एक बंधारण में बंधे रहे और वो इस तरह कहीं जल्दी छुपे नहीं, बराबर कुछ करके भाग ना जाए, चला ना जाए। तो दिस इज व्हाट द प्रिवेंशन मेजरमेंट इज। तो देर आर डिफरेंट वेज, बराबर डिफरेंट सेक्शन 106 टू 124 तक सेक्शन से जिस अलग अलग रीत से किस तरह श्योरिटी ली जा रही है और बॉन्ड बनाए जा रहे हैं उसके बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, Introduction. Chapter 8 related to security for keeping the peace and for good behavior under section 106 to 124. Now, the main object of the chapter is prevention is better than cure. Section 106 to 110 contain the substantive law related to with the prevention of crime, and section 111 to 124 contains the procedural law. राइट तो दोनों लॉ इसमें आ गए हैं। दूसरी बात, सेक्शन 106 to 110 मेंशन दैट 5 टाइप ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम दैट हैज बीन द मेजरमेंट हैज बीन टेकन फॉर श्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। ये कौन कौन है? नाउ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन, दैट इज सेक्शन 106(1). According to this section, when a person is convicted either by court of session or by court of first class magistrate of offense specified below or abetting any such offense, and the court of the opinion that it is necessary to take security from such a person for keeping the peace at the time of passing the sentence। जब वो सेंटेंस पास करते हैं तब उनको ऐसा डाउट लगता है कि ये पर्सन जो कठघरे में खड़ा है शायद ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, शायद कुछ बनाओ या स्टेप ऐसा स्टेप कर सकता है जिससे डिस्टर्ब हो, तो इसलिए वो श्योरिटी या तो सिक्योरिटी का सोचते हैं। तो इट मे ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटीज फॉर कीपिंग द पीस for such period not exceeding 3 years. Now there is a limit for this also, right? Maximum 3 years. So that is the thing. So not exceeding 3 years. On conviction of which of the offense security may be asked, section 1062 ये कहता है कि any offense punishable under chapter 8 of IPC 1860 of other than offense punishable under section 153A or section 153B और सेक्शन 154 thereof, ये सारे ऑफेंस लोगों के साथ जो ऑफेंस करते हैं उन लोगों को श्योरिटी या तो बॉन्ड लिया जाता है। नेक्स्ट, एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ इंक्लूड्स असॉल्टिंग और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स for or committing mischief, they are also about to give the surety or the security. Now, any offense of criminal intimidation, any other offense which caused or was intended or known to be likely to cause a breach of peace, that's the thing. So when the bond so execute shall become void, section 106 का 3 क्या बोलता है? So according to this section, the bond execute under section 1 shall become void when the conviction is set aside on appeal or other side. Who may give order to execute bond? Court of session or court of magistrate of the first class may order the person. Now section 1064 कहता है कि may also be made by an appellate court or by the court which exercising its power of revision. इसका केस लॉ है वो है Madhulimaya versus SDM Mongiar 1977. In this case, the court held that any court or magistrate makes an order of security for keeping the
पीस ऑन कन्विक्शन, कन्विक्टेड पर्सन को शांत रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए ये एक मेजरमेंट है या तो एक स्टेप है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस लाइक 1071, when an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace, etc., and is of the opinion that there is sufficient ground of proceeding, he requires such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, right? हमेशा लॉ सामने से एक सवाल करती है, क्यों ऐसा ना करे आपके सामने? Give a valuable answer or reply, right? That is the thing. So with or without surety for keeping the peace for a period up to 1 year, and वो जो reply आता है वही उनका श्योरिटी जैसा बन जाता है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मैं ना करने वाला हूँ, मैं ना यहाँ से जाने वाला हूँ। दिस इज वन टाइप ऑफ श्योरिटी और बॉन्ड बन जाते हैं क्या। सो सेक्शन 1072 क्या कहता है? द पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट और द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ द पीस इज एप्रीहेंडेड शुड बी विद in the jurisdiction of the magistrate. The main object of this section is to stay the disturbance of the peace and order with immediate effect. The executive magistrate has been empowered to take action under this section. The objectives of this section are preventive but not punitive, right? They are just preventive measures. Security for good behavior from person disseminating seditious matters section 108. तो अभी तक का जो था वो डिस्टर्बेंस के लिए था, राइट? अब जो आएगा वो है गुड बिहेवियर के लिए। सो द प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन हु इज इंटेंशनली disseminating, that is attempts or abets any matter the publication of which is punishable under section 124A, that is sedition, IPC under section 153A, promoting enmity between classes, etc., under section 295A, that is maliciously insulting the religious beliefs. So any matter concerning a judge which amounts to criminal intimidation, defamation, another thing makes, produces, publishes, etc., any obscene matter referred to in section 292 IPC. No proceeding shall be taken against the editor, proprietor, printer or publisher except by the order or under the authority of the स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो तीन ऊपर जो है वो तो हो गई उन लोग के सामने प्रोसीडिंग, लेकिन इनके जो एडिटर है, प्रोपराइटर है, प्रिंटर है या तो पब्लिशर, इन लोगों के सामने ऐसा कोई ऑर्डर जल्दी निकलता नहीं। लेकिन इट शुड बी अंडर द मैजिस्ट्रेट मे रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज व्हाई ही शैल नॉट बी, मैंने जैसे बताया था उसको रिप्लाई देना जरूरी है, टू ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विथ और विदाउट श्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड not exceeding 1 year. Security for good behavior from suspected person. Section 109. When a person takes precautions to conceal his presence, मुंह छुपाने लगता है या तो बेरुपिया बन के घूमता है, छुपा अपना चेहरा छुपा के कुछ करना चाहता है, राइट? तो ये जब मजिस्ट्रेट को डाउट होता है, राइट, तो विद अ व्यू टू कमिटिंग अ cognizable, that is dangerous, right, cognizable offense within the local limits of the jurisdiction of an executive magistrate, the magistrate may require such person to show cause why he should not be ordered a bond for good behavior for a period not exceeding 1 year. The words concealing his presence मतलब क्या होता है कि in this section 109 are sufficiently wide to cover not only the concealment of the bodily presence in a house or grove but also the concealment of the appearance, wearing a mask or covering the face, disguising by wearing a uniform, etc. को हम लोग बोलेंगे concealing, right? तो concealing his presence ये बताता है। Now, security for good behavior from habitual offender. Habitual offender मतलब जो बार बार गुनाह करते रहते हैं उन लोग को बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर। ये किया, सजा काटी, फिर वापस बाहर आए, वापस करने लगे, राइट? दे आर कॉल्ड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो व्हेन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन पर्सन हु इज हैबिचुअल रॉबर, हाउस ब्रेकर, thief or forger, habitual receive of stolen property, habitual protector or harbors of thieves or habitual abettor in the concealment or the disposal of stolen property, habitual kidnapper, abductor, extortioner, cheat or a person habitually committing mischief, offenses relating to coin stamps, etc.,
habitual offender or abettor of breach of peace, habitual offending committing or attempting to commit or abetting the commission of offences under the Acts like Drugs and Cosmetics Act 1940 and Employees Provident Fund Act 1952, the Custom Act 1962. Such magistrate may require how, cause, why he should be ordered to execute upon with sureties for his good behavior. ये सारे लोगों को मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर करेंगे कि आपको एक बॉन्ड देना जरूरी है, अगर नहीं है तो रिप्लाई करो, बराबर। क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों आपसे श्योरिटी नहीं मांगना चाहिए? फॉर ये गुड बिहेवियर फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years. भुवनेश्वर केयर वर्सेस Air 1920 CPAT. In this case, the court held that the word habit and habitually has been defined. Habit means a character. It becomes a character. Order to be made in section 111. When a magistrate acting under section 107, section 108, 109 or section 110, it is necessary to require any person to show cause under such section. He shall make an order in writing, setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be enforced, and the number, character, and the class of sureties if required. Jahir Ahmed versus Ganga Prasad. All criminal cases of the court held that section 111 are mandatory and not compliance with them not be treated as irregularity. Now, procedure in respect of the person present in court section, that is section 112. If the person in respect of whom such order is made in present, then court it shall read over to him. अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट है तो मैजिस्ट्रेट रीड आउट करेंगे, बरोबर। तो इफ ही सो डिजायर द सब्सटेंस देयर ऑल शैल बी एक्सप्लेन टू हिम। नाउ समन्स और वारंट, अगर वो पर्सन नहीं है तो पहले मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, समन्स देंगे, बरोबर, और उनको कोर्ट में बुलाएंगे। तो इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू अ समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody is to bring him before the court. Provided that whenever it appears to such magistrate, upon the report of the police officer or upon other information, the substance of which report or information shall be recorded by the magistrate, that there is a reason to fear the commission of the breach of the peace, and that such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, the magistrate may at any time issue warrant of his arrest. तो अगर वो समन्स या वारंट देने के बाद अगर भी वो नहीं आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उससे खतरा हो सकता है, तो सबसे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, तुरंत वारंट इशू कर देंगे उसके नाम से। 140 कॉपी ऑफ ऑर्डर टू accompany summons or warrant. Every summons or warrant issued under section 113 shall be accompanied by a copy of the order made under section 111, and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to the person served with or arrested under the same. 115 क्या बोलता है कि पावर टू डिस्पेंस विथ personal attendance. The magistrate may, if he sees sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause. Why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior may permit him to appear by a pleader. Now, inquiry as to truth of information. After a notice, magistrate to make inquiry as to truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidences as may appear necessary. This can be done by the magistrate only when an order is in section 111 has been read or explained in under section 112 to a person present in the court, or when any person appears he brought before magistrate in compliance with or execution a summons or warrant issued under section 113. Now, order to give security, that is section 170. If such inquiry is completed under 116 and it is proved that it is necessary to get a person execute a bond with or without sureties,
magistrate shall make the order that the person concerned should give surety. तो 116 में डिसाइड होता है कि whether he must give surety or not, right? 111 में रीड आउट होता है, 112 में जो है अगर वो नहीं है तो समन्स दे के उसको बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है, 113 में आप एक कॉपी भी लेके साथ में जाते हैं ऑर्डर की, राइट? तो डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट सेक्शन 118, इफ द रिजल्ट इज इन फेवर ऑफ द पर्सन, अगर रिजल्ट इसके फेवर में आया तो ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द कस्टडी इफ ही इज इन कस्टडी. Commencement of period for which security is required. According to this section, if any person, that is 119, if any person in respect of whom an order requiring security is made under section 1062 or 106 or 117 is at the time of such order is made sentenced or undergoing sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence, and in other cases such period commence on the date of such order unless the magistrate fixes a later date. अगर वो imprisonment में है तो वो continue होगा और it depends on the magistrate fixes the later date. Now, contents of bond section 120. 1. The bond to be executed by any such person shall bind him to keep the peace or to be good behavior as the case may be, and in the latter case the commission or attempt to commit or the abatement of any offense punishable with imprisonment is a breach of bond. तो दैट इज द थिंग, अगर उन्होंने बॉन्ड दिया है और एग्जीक्यूट हो गया और अगर उसके बाद अगर कुछ भी उन्होंने ऐसा कुछ कमीशन किया, मतलब उन्होंने ये ऑफेंस किया, तो इट इज अ ब्रीच ऑफ बॉन्ड. पावर टू रिजेक्ट श्योरिटी सेक्शन 121. In this section, magistrate to refuse any surety to accept, which is to reject, which was previously accepted by or the predecessor on the ground that the same is an unfit person for the purpose of the bond. Now, 122, that is imprisonment in default of security section, right? Security, that is section 122. When a person fails to give security, he shall be committed to prison, or if he is already in prison, he is to be detained in prison, right? तो अगर वो फेल होते हैं सिक्योरिटी देने में तो either he is detained, right, or until such security period expires or until within such period he gives the security. Power to release persons imprisonment for failing to give security section 123. The district magistrate and the chief judicial magistrate has to power persons for failing to give security. If he thinks that it can be done without hazard to the community, it is to open to High Court or Court of Session or the District Court Magistrate or Chief Judicial Magistrate to reduce the amount of security. So it is depends on the release persons imprisoned for failing to give security. बराबर, सिक्योरिटी देने में अगर वो फेल होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पास पावर होता है. तो if they think that it can be done without a hazard to the community and it is open to the High Court or Court of Session, Court, District Court Magistrate or Chief Judicial Magistrate to reduce the amount of security, क्योंकि वो दे नहीं पा रहे. तो security for unexpired period of bond section 124. When a person who appearance a summons or warrant has been issued under the provision to subsection 3 of section 121 or subsection 10 of section 123 appears, he brought before the magistrate or court. Magistrate or court must cancel the bond and order the person to give a fresh security. तो अगर वो लेके आ जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? कैंसिल द बॉन्ड, बॉन्ड को कैंसिल करेंगे और फिर उसके बाद will ask him for a give a fresh security for the unexpired of the term of the bond. Conclusion. The main object of this chapter is that prevention is better than cure, right? The main purpose is to maintain the peace and also the good behavior of the citizens, right? Or mainly who are convicted or mainly who are about to do offenses, right? तो जहाँ जिन लोगों पे आशंका होती है, डाउट होता है, उन लोगों से इस तरह का श्योरिटी लेके उनको इस एक बाइंडिंग, एक बंधारण में रखा जाता है, so that they remain in control and remain calm. That's the thing. बाकी कोई पर्पस है नहीं. So hope you got it. Right? 106 to 124 तक का जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है. अगर आपको इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, यू कैन राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड इट, और आपका ईमेल आईडी भेज देना तब मैं आपको भेज दूंगा. ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, शेयर ज़्यादा करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई.
प्लीज सब्सक्राइब करो, राइट दोस्तों। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। आई नीड सब्सक्रिप्शन, राइट। जितना सब्सक्राइब करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। बाय, हैव अ नाइस डे।